Good afternoon, guys. I hope you can hear me. Yes, sir. Okay. So today we are going to do some more numerical from August. Just give me a moment. How's your written preparation थ्योरी for का the चल theory part? थ्योरी का चल रहा है सर, कुछ कुछ है इसमें, बस नहीं है सर। क्या क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है थ्योरी में? सर थ्योरी में ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है सर, कुछ जैसे ना वो है प्रूव है, मतलब कि ऐसे करके वो है कि जो भी आप उसको डाल दीजिए ग्रुप में, थ्योरी में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस. Okay, this is the question from last month. Just see. हाँ सर, EMF का derive an expression for EMF induced in an AC generator। ये अगस्त का ही है, अगस्त का 7th क्वेश्चन, पार्ट उसका ए। 7th question. Okay. पहले क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल साइड देखते हैं. ओके, फिर इसके बारे में बात करेंगे हम. So can you solve this? Question number 8. A 200-volt long shunt compound wound generator has a full load output of 20 kilowatt. The various resistance are as follows.
Armature resistance including brush contact is 0.15 ohm. Series field is 0.025 ohm. Interpole field is 0.028 ohm. Shunt resistance is 115 ohm. And the iron loss at full load is 70 R78 watt. And friction and windings loss are 590 watt. Calculate the efficiency at full load. Can you solve this question? नॉर्मल केवीएल नहीं अच्छा, इसी का आपने ग्रुप में डाला था क्या? नहीं नहीं, इतना ही तो कौन सा क्वेश्चन है वो सर, मैं केवीएल वाला ये क्या जाना था डाला था लास्ट आपने क्वेश्चन ग्रुप में? इसका नंबर 10, नंबर 10 डाला था क्या? ठीक है, जिसमें नंबर सॉल्यूशन 10। ही दिया। नंबर 10 आपको कहाँ से मिला है सॉल्यूशन? मैं तो सर वो उसमें सर डीजल शिप में मतलब कि क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन उसका मिला ही नहीं है। क्वेश्चन अभी तक वो अंडर प्रोसेस है, आंसर उसका। हम्म। चलो पहले ये क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्या क्या दिया है। ये किया था ट्राई सॉल्व करने का? हाँ करो। क्या आंसर आए थे? एक Vignesh, you tried this one? No, sir. I'm playing now, sir. You just try. हाँ सर, ये भी डाला था मैंने। इसमें इशू था उसका क्वेश्चन का, अभी याद आया मुझे, मैं लगा रहा था। इसमें नॉर्मल केवीएल मतलब कि उसमें सॉल्यूशन अलग दिया है, मेरा तो अलग आता है। आपका क्या आंसर आया है? मेरा आंसर अलग है। तो क्या करूँगा, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग। यार मेरा 84.46 आया था एफिशिएंसी, गलत है? 84.46, 46। राइट? हम्म। कैसे निकाला आपने? सर सबसे पहले तो हम लोग ने सर नॉर्मल ये जो लूप है इधर राइट साइड वाला मतलब कि सबसे पहले केवीएल लगाया, तो केवीएल से जो हम लोग का इक्वेशन आया वो आया ईजी, मतलब कि जनरेटर का बैक ईएमएफ माइनस आईए, आईए ब्रैकेट में आर ए आर एस सी, और ये आर आई पी बोल Okay, I'm सकते हो giving उसको। you the controls. I'm giving you the controls. You can share your solution. सर मैं दिखा दूंगा, मैं उसमें भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा। Okay.
इसमें इशू ये था सर कि मैंने जब इसको ना सर डीलरशिप से चेक करने की कोशिश किया तो डीलरशिप ने इसमें कुछ, हाँ इसमें डीलरशिप ने आईएल जो है सर, नहीं सर ये जनरेटर है ना, तो उन्होंने आईएल ग्रेटर देन आईए दिखाया, मतलब कि आईएल को निकाला है आपका, मतलब कि आईए माइनस आई एस एच इज इक्वल टू आईए, आईएल माइनस आई एस एच इज इक्वल टू आईए किया है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आईए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आईएल होना चाहिए, हम्म। यही होना चाहिए ना, तो बस दिस इतना इज द मिस्टेक डायग्राम है। फॉर लॉन्ग शंट। ठीक हाँ है, दिस इज ऐसा शॉर्ट शंट के लिए भी डायग्राम हो सकता है, ठीक है, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। द ओके। सॉल्यूशन व्हाट यू हैव पोस्टेड इज करेक्ट। ओके सर, एज पर मी दिस इज करेक्ट। ठीक है। मतलब कि सर केवीएल तो ऐसे ही लगेगा ना, क्योंकि डीलरशिप हाँ, ने गलत लगाया है इस पे। डीलरशिप पे मत जाओ। 84 इज करेक्ट आंसर। ओके। हम्म। इसका एक और तरीका भी है, उसमें थोड़ा जी कैलकुलेशन मिस्टेक है, दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू शेयर। आई विल शो यू द सॉल्यूशन, ओके। वो भी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है बिकॉज ऑफ सम कैलकुलेशन मिस्टेक, थोड़ा इधर उधर है। इसको भी एक बार देख लेना इस वे से। जी। तो efficiency of everything is output upon input, right? जी सर। So output equal to full load output power of the generator and input equal to input of the generator, right? So now we are going to calculate. So total armature resistance is point 0.15 plus हाँ, 0.025, right? We are going to add all this. ठीक है। So the resistance we are getting is like 0.175 ohm. सर Shunt ये बता resistance, क्यों नहीं आ रहा है, वो इंटरपोलेशन नहीं ऐड किया आपने। interpolation कौन सा? 0.028। हाँ, ठीक है, वो थोड़ा और भी मिस्टेक है, मैं आपको बताऊंगा। टोटल शंट फील्ड रेजिस्टेंस है 115, आयरन लॉस है 780 एंड फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉस है 590। So all of us know power equal to VI, right? यस So सर। input power will be equal to वी voltage आई। across armature and current, right? So total, if you want to find out the total armature power, you want to calculate the armature current, V equal to IR. हाँ So V divided by R. So here R you have to put 115, right? By mistake, here it's 0.175. हाँ, वो ठीक है। तो ये वैल्यू आई की स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू आई की यहाँ पे ज्यादा होगी है 1142। यू कैन सी वी कैन नॉट हैव करंट लाइक दिस, राइट? 101.74 आएगा ये। हाँ। सो वी एस एच निकाल लेना। वी एस एच निकाल लिया। इनपुट पावर क्या होगी? वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर, करंट थ्रू द आर्मेचर, वी पावर इक्वल टू वी आई, दिस इज वी एंड दिस इज आई, देन अगेन वी इंटू आई शंट के लिए। ये सब करोगे तो आपका आ जाएगा इनपुट पावर। तो इनपुट पावर की वैल्यू इतनी बड़ी इसलिए आ रही है बिकॉज यहाँ पे करंट गलत है, राइट? ठीक है, ओके। तो इनपुट पावर इतना आ जाएगा, डिवाइड करोगे, मेरी 87 आ रही है, आपकी 84 आ रही है। आप इसमें करंट की सही वैल्यू रखोगे 1 पॉइंट समथिंग, 1.15 है आई थिंक सही वैल्यू, तो अब सेम आंसर कौन सी आएगा। सर, आई आईए की बोल रहे हो। हाँ। आईए की है 101.74। हाँ, तो सेम आंसर आएगा फिर उसके बाद ना। ठीक है, और that is also a correct way what you have done. Obviously if you are doing by your way, you are drawing the diagram also, right? यस सर। So that have the added advantage even if there will be some mistake. Okay.
So Vignesh, that is the diagram for long shunt. Yes, sir. शॉर्ट शंट का भी एक डायग्राम होता है, तो उसके लो देख लेना उसको थोड़ा। शॉर्ट सर में क्या RSC नहीं होगा सर? थोड़ा सा अलग है डायग्राम उसका। ओके, आई विल ड्रॉ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लॉन्ग शंट का डायग्राम होता है ऐसा, जैसा आपने ड्रॉ भी किया है। ओके, दिस इज योर RSH, RSE, वोल्टेज, लोड। ओके, ये था लॉन्ग शंट का डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू सी द शॉर्ट शंट डायग्राम। इट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द लॉन्ग शंट। ये क्या था सर? ये जो डायग्राम है, क्या हुआ? कुछ इधर कॉल आ गया। शॉर्ट शंट के डायग्राम में क्या होगा? ये तो सेम ही है। ये आपकी वोल्टेज आ गई, रेजिस्टेंस इधर लगेगा। इधर ठीक है, ये पीछे डायग्राम, ये ऊपर लगेगा RSC, अच्छा ये RSH, ये वोल्टेज, ये लोड। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है डायग्राम में। ओके, सीरीज वाले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये शंट में देखो, सीरीज हाँ, और शंट का मिक्सचर टाइप का। या इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग शंट, if you are talking about long shunt, in the long shunt I'll just draw the diagram for you. uh, Let me bring the board back. लॉन्ग शंट में ये है लोड, ये है अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे आ गया आपका रेजिस्टेंस, दैट इज RSC, और यहाँ पे आपका शंट रेजिस्टेंस आ गया, दैट इज RSH। ये जो करंट होगा ये होगा ISH, ये होगा लोड करंट, राइट, IL, और ये होगा आर्मेचर करंट, दैट इज IA। Clear? Diagram is clear? So if you want to calculate shunt current, the formula for shunt current will be ISH equal to V upon V upon RSH। RSH, right? If you want to calculate the series field current, if you want to calculate the ISE, that will be equal to ISA, that is the armature current, right? And armature current is equal to IL plus ISH. ओके, यही आप बोल रहे थे ना? हाँ, यही यही होता है, वहाँ गलत लिखा है वो जहाँ पे वो आपने आप लीडरशिप। लीडरशिप में ठीक है, कुछ IL माइनस को कर दो। और नेक्स्ट है, अगर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करनी है इसमें, तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वोल्टेज इज टर्मिनल वोल्टेज, लेट इट बी प्रिसाइज। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है V इक्वल टू EG माइनस IA RA माइनस ISC ISH। RSC। ओके, इसमें I कॉमन ले सकते हैं, फॉर्मूला इजी हो जाएगा। तो ये अगर ये आपको ये वोल्टेज सर, ड्रॉप, हाँ हाँ समझ गया समझ गया सर। अच्छा, इसमें ISH नहीं आएगा ना? मतलब कि सिर्फ वो इसका उसकी तरह लेंगे, क्या कहते हैं, सीरीज फील्ड, सीरीज वाले जनरेटर की तरह लेंगे।
ना आ आपकी रही। वॉइस नहीं आ रही है। ओके सर। ठीक है, अभी आ रही अगर है? आपको पावर डेवलप निकालना है, पावर डेवलप विल बी इक्वल टू ईजी। ईजी इज व्हाट? ये ईजी था ना आपका सेंटर में जो लगा रहा था। हम्म, ईजी माइनस, सॉरी, ईजी इंटू आई ए, राइट। हम्म, एंड लोड पे जो पावर लग रही है, पावर आउटपुट, दैट इज द एक्चुअल आउटपुट, राइट। हम्म, दैट विल बी इक्वल टू वी इंटू आई एल। ठीक है, तो आपको ये पावर निकालनी पड़ेगी और इनपुट पावर निकालनी पड़ेगी, उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका एफिशिएंसी निकल जाएगी। एक बार शंट वुंड के भी फॉर्मूले देख लेते हैं, सॉरी शॉर्ट शंट के भी देख लेते हैं। शॉर्ट शंट का डायग्राम में ऐसा कुछ होता है। देर आर हाई चांसेस कि इस टाइम वो ये वाला क्वेश्चन डाल दे। ये लोड है, ये आपका आर एस सी सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, ये शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो करंट होगा डेट विल बी आई ए, इसमें जो आएगा आई शंट, और इधर जो जाएगा आई एल, राइट। और इसमें जो आएगा डेट विल बी आई सीरीज, राइट। हम्म, एंड दिस इज द वोल्टेज। So if you want to calculate shunt field current, so ISC equal to IL। पहले ISC किसके इक्वल था? IA के इक्वल था, राइट। हम्म, नाउ इट विल बी इक्वल टू IL। अगर आपको शंट करंट निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू V प्लस IL RSC डिवाइड बाय RSH। ठीक है, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो आई राइट एस इट सी एज से सर आर एस एच क्यों होगा सर? आर एस सी होगा ना? आई एस एल, अच्छा। SH निकाला है ना, हाँ तो ठीक डिवाइड है। में SH ही आएगा ना। ये फॉर्मूले याद रख लेना, अगर नहीं भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है केवीएल लगाने में तो याद कर लो, दो तीन फॉर्मूले ही है। हम्म, आई एस एच कैन ऑल्सो बी, वी कैन राइट इट एज ए ईजी माइनस आई ए आर ए डिवाइड बाय आर एस एच। आई थिंक बेटर है मैं सब आपको क्लियर एक उस पे दे देता हूँ, है ना। हाँ सर क्लियर बिल्कुल। देंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई Yes, sir. दिस फॉर्मूला फॉर यू। ठीक है, देखो ये है लॉन्ग शंट का। ठीक है सर। ओके, now we'll see for short shunt. ठीक है। Okay, even if you will be able to draw the diagram, you will get half mark, I think. What is long shunt and what is short shunt?
Okay, now we will move to question number 9. I think 9 you should be able to solve. This is a repeat question. And we have already done this question in the class before. Have you tried to solve this question? So it's a 72 kVA transformer supplying a heating coil and a lightning load of 12 kilowatt with a unity power factor and a motor load of 70 kVA at 0.766 lagging power factor. Calculate the minimum rating of the power factor improvement capacitor you have to fit so that your transformer is not becoming overloaded. We have done this question, right? Draw the power triangle. Try to solve. Vignesh, you are comfortable with question number 8, right? Previous question. Yes, sir. Yes, Vignesh? sir. Okay. Yes, sir.
15.4 kVAR का कैपेसिटर। हेलो हेलो। Yes, 15.4. Vignesh, you have also done? I'm also doing so. Okay. Okay, we will just see the solution. Okay, Vignesh, just check if you are on the right path or not. Okay, sir. So, as per this question, KVA is 72, motor KVA is 70, power factor is 0.766, active power is 12 kilowatt. So we have to find out the capacitor we have to put so that our transformer is not getting overloaded. So this is the power triangle. Base of the power triangle is what? Real power. Perpendicular is reactive power, that is your kVAR, and then you have the apparent power, that is kVA. So if you want to find out motor actual power or real power, that will be kVA cos phi, right? You can calculate kilowatt on the motor. That will be 53.62, and you have a Sir. load of 12 kilowatt already there. So total active load is 65.3.
62. Now again from the power triangle, if you want to find out kVAR for the motor, that will be kVA sin phi. So kVA sin phi comes out to be 44.9. If you want to calculate transformer kVAR, so transformer kVAR will be equal to under root of kVA square minus kilowatt square. So it comes out 29.63. Just subtract both of them. That will be your answer. Correct? Okay, sir. Akshay, तो this is the way you did it? मैंने एक भी केवीआर साइन लगा के नहीं किया था, वो सब वो करके निकाला था मैंने, आई कुड न्यूज लगाने के। हाँ, कैसे भी निकालो, बट फाइनल ये आंसर आ रहा है ना। हाँ, बिल्कुल सही आप है। साइन थीटा वो सब करके भी निकाल सकते हो, डजेंट मैटर। क्लियर? ओके, नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन. We will go to the question of your written question number 7. What you were saying? So the question was drive an expression, right? This one you are talking about. यस सर, यस सर। Drive an expression for EMF induced in AC generator. So all of us know the electromotive force, that is EMF induced in AC generator, is by the Faraday law. यस सर। I hope you remember the Faraday law. We did all this when we started electrical, right? हाँ सर। Yes, sir. What Faraday law states? The law states that EMF induced in a closed loop is proportional to the rate of change of magnetic flux through the loop, and mathematically it can be shown as E equal to minus d phi by dt, where you can see E is in the volt and d phi by dt is what? Rate of change of magnetic flux. ठीक है सर। Rate of change of magnetic flux. Okay. So next is to drive an expression for the EMF induced in the AC generator. You need to consider step up of the generator. In the basic AC generator, there is a coil, right? Rotating with a magnetic field. And the magnetic field line pass through the coil. As the coil rotates, magnetic flux is being cut through the coil. The EMF induced in the coil is directly proportional to the change ये in the क्या flux. रोटर कॉइल की बात कर रहे हैं? Yes. Okay. तो आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी कॉइल की, तो उसका फॉर्मूला होता है बी ए कोस थीटा, राइट? वेयर थीटा इज द, सॉरी, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इज द magnetic line forces strength, A is the area, and theta is the angle between the magnetic line of forces and normal to the coil surface. तो इसको d phi by dt निकाल देंगे. Now let us consider the coil is rotating at angular velocity omega. Obviously coil rotate कर रही होती है, right? In radian per second, the theta will be equal to omega t. So here instead of theta you can put the omega t. Clear? So now what you are going to do, you are just going to differentiate with respect to time. So d phi by dt will be equal to what? D by dt ba cos omega t. When you are going to solve this differentiation, it will comes out to be ba minus sin omega t d omega t upon dt, right? And further you are going to simplify, it will come to minus ba omega sin omega t. Okay, ये आ गया आपका sin omega t. अब आपका E इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी. नाउ यू पुट एवरीथिंग, फाई की वैल्यू डाल दो इसमें, तो आपकी क्या ईएमएफ की क्या वैल्यू आ गई? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट? तो ये आपकी इक्वेशन आपको ड्राइव करनी थी. पर सर उसने तो कुछ 44 वाली इक्वेशन डिराइव की थी, एक मिनट सर। किसने करी है? मैं बता डोंट रहा हूँ गो सर। बाय द डीजल शिप. सर एक बार सुन तो लीजिए वो इक्वेशन।
क्या लिखा है उन्होंने 44? सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 था ना? हाँ 7 था। ओके, बताओ। ये 44 केपी केडी एफ टी टी वोल्ट्स, मतलब कि हैज एक्चुअल वोल्टेज अवेलेबल पर फेज इज 4.44 केपी केडी एफ। और टी है, टी जो है सर वो नंबर ऑफ कॉइल्स और टर्न पर फेज है, इक्वल टू। या तो आप इसका कुछ फोटो वगैरह डाल सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। आई कैन स्टिल मेक आउट, ऐसे बहुत मुश्किल है, आप क्या बोल रहे हैं उसको समझना। ये सर जस्ट पुट द सॉल्यूशन व्हाट दे हैव मेड। कुछ शेयर मत करिएगा। बट आपसे उन्होंने पर फेज नहीं पूछा ना। नहीं, पर फेज नहीं पूछा उन्होंने हाँ। मुझसे। बस ये डिराइव द एक्सप्रेशन। हाँ, मतलब कि इतना ही पूछा है कि एक मिनट। सर अभी दूसरा कुछ कराइए, मैं भेज रहा हूँ, 5 मिनट भेज रहा हूँ। क्योंकि वो ना सर, वो कुछ ऐसा हो गया कि मैंने दोनों उसमें मोबाइल और फोन में लैपटॉप में खोल लिया था, तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। सिर्फ मोबाइल में ही खुल गया। ये फोटो खींच के भेज रहा हूँ। उनका है थोड़ा। हाँ, मतलब कि चल थोड़ा ठीक है। वो रीसेट करने में टाइम लगता है, कभी कोई फंस So the जाता next question is, what are the interpol, right? Explain the purpose of the interpol. है। इंटरपोलेशन सर मैंने किया है सर, ये उसकी थ्योरी के लिए कभी। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 का पार्ट है। तो मैंने शेयरिंग बंद कर दी क्या? गिव मी अ मोमेंट। नहीं चल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, राइट? एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरपोल and state their magnetic polarity relative to the main pole and both generator and motor. So the interpole, also known as commutating poles or compensating winding, are a feature in the DC generator or motor. Their purpose is to improve the commutation process, which is the reversal of the current direction in the armature coil as it rotates in the DC machine.
Interpole are positioned between the main field pole and having the specific magnetic polarity relative to the main pole. The key purpose of the DC generator and the motor are, the purpose is improve commutation. Commutation Only is a one, sir. critical. What happened? Commutation is a critical process in DC machine because it ensures that the current is flowing through the armature winding. Change the direction at the ring time as the armature rotates. Without proper commutation, there can be a sparking at the brush and leading to the arcing, wear, and reduced efficiency. Interpol help to improve the commutation by creating an additional magnetic field that assists in the reversal of armature coil current. So basically, it is helping in the reversal of current in the armature coil, and because of that, you can eliminate all these which is damaging your commutations, which is damaging your brush. Next is now next function is minimize the armature reaction. So when the current flow through the armature coil, it generate a magnetic field that interact with the main field pole. This interaction can distort the main field and the effect of the machine performance. Interpole are designed to counteract with this armature reaction and helping to maintain a more constant magnetic field in the air gap. Okay. Now we are going to see the magnetic polarity of the interpole relative to the main pole. How they are going to have, we are going to connect them with the main pole. So generator in a DC generator, interpole are positioned midway between the main field pole and having the opposite polarity that of the adjacent main pole. For example, if the main pole has a north magnetic polarity, the adjacent interpole will have a south polarity. This arrangement helps to create the smooth continuous magnetic field as the armature rotate and aiding the proper commutation. Motor in a DC motor, the polarity of the interpole is same as that of the adjacent main pole. This is the main objective in a motor is to generate the magnetic field that assists the rotation of the armature. So if the main pole has a north magnetic polarity, the adjacent interpole will also having the north magnetic polarity. So for motor, they are having the same polarity, whereas when you are putting them in the generator, you are having the opposite polarity so that you can have a proper commutation. Clear? Yeah. No need to writing much. This is only 6 mark question, right? Write only one page, that will be enough. Next is what all factor determine the motor speed. So this you can tell what all factor can determine the motor speed. हाँ, So what all factor determine? तो मोटर स्पीड हो गया सर, सबसे पहले वोल्टेज, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड का? 1 is equal to 120 F by 120, P, right? तो So फ्रीक्वेंसी 120 एंड F, पोल, F क्या है? Frequency. So by varying the frequency, you can control the motor speed, right? By changing the number of poles, you can change the speed of the motor, right? Yeah. These two are the main. Correct? yes sir, Or how you can control? We studied the two type of motor, right? What was that? तो शंट और सीरीज, नहीं सॉरी सर, इसके लिए इंडक्शन के लिए सर, वो एक तो सर आपका पढ़ा था ना ये? हाँ ठीक है सर, एक स्क्वायरल के हो गया, दूसरा वुंड हो गया। वुंड में सर डायरेक्टली
रेजिस्टेंस लगा के कर सकते हैं। स्क्वायरल स्पेस हाँ में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उसके लिए सर हम लोग दूसरे तरीके भी करते हैं, जैसे कि सर वीएफडी भी यूज कर सकते हैं। और आप हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी चेंज करके भी कर सकते हैं ना, स्पीड चेंज, और बाय पुटिंग द variable frequency drive, but obviously in that case also you are changing frequency, right? So main two factors are frequency and the pole. Okay, just write down the formula that ns equal to 120 f by p. Define what is n, what is f, what is p. So then write down, first point is frequency. Synchronous speed is directly proportional to the frequency. So as you are going to increase the frequency, the speed of the motor is going to increase. And if you are going to decrease the frequency, the speed is going to get decreased. Okay. Similarly, you explain for the number of poles. That will be sufficient for this 6-mark question. And additional, if you have time, you write down about the frequency, and by changing the in the wound rotor, by putting the external resistance, you can change the rotor speed. Clear? Okay, guys. कल करेंगे वो एसीबी वगैरह। एसीबी का क्या क्वेश्चन है आपका? सर यदि भी वही फंक्शनिंग बता दीजिए सर। ठीक है, इसका कल एसीबी बीसीबी SF6 सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक्चुअली आप वो आज करना था, बट आपके थोड़े से 2 क्वेश्चन थे, तो इसके कारण से रह गया आज। एनीवे विल डू इन yesterday class, sorry, tomorrow class. Okay, sir. Okay guys, I hope you are getting something. Now you already know a lot of things. Yes, sir. Okay guys, thanks for your time.